जी जनाब। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ एक दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखूंगा जिनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उन MCQs को डिस्कस करेंगे। आज के दिन का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following statements true? Counting can be described as the recording and summarizing of transactions. दूसरी ऑप्शन दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग describes the production of statement of financial position and statement of profit or loss for internal use। ठीक है जी। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है? Accounting can be described as the recording and summarizing of transactions, and दूसरी है financial accounting describes the production of statement of financial position and statement of profit or loss for internal use। अच्छा जी, ये है एक सवाल, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। दो ही MCQs देखेंगे आज। दूसरा है the terms counting and book keeping or
classified as सेम, एक जैसी हैं, डिफरेंट हैं, अपोजिट हैं, या नन ऑफ द अबव ऑफ दीज, इन तीनों में से, इन पूरे तीनों में से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हम दूसरे पेज पे ले जाते हैं। ठीक है जी, ये दो MCQs हैं। Which of the following statements are true? Accounting can be described as the recording and summarizing of transactions. अकाउंटिंग जो है वो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग और उनकी समरी तैयार करने का नाम है। और दूसरी स्टेटमेंट है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने का, और इंटरनल यूज़ बिजनेस के अपने अंदर इस्तेमाल के लिए। इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू है, वो कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरा क्वेश्चन है आज के दिन का, द टर्म्स अकाउंटिंग में बुक कीपिंग आर कंसिडर्ड। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दो टर्मिनोलॉजीज हैं अकाउंटिंग में। इन चारों में से एक ऑप्शन है कि ये दोनों सेम है, डिफरेंट है, अपोजिट है, या इन तीनों में से कुछ भी नहीं। आज की वीडियो के लिए इतने काफ़ी है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। अगली वीडियो में हम आपको इन दोनों के आंसर भी बताएंगे और फिर अगले MCQs भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।